आपके अपने YouTube चैनल अधिकांश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि एक नाटक क्या होता है ना? लेकिन क्या होगा अगर कोई कहे कि दुनिया भर की संस्कृतियों में इस बात पर एक गहरा बुनियादी मतभेद है कि एक नाटक का असल मकसद क्या होना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं है। ये कहानी कहने के दो बिल्कुल अलग-अलग फलसफे हैं। तो चलिए आज इन दो खाकों को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक नाटक का आखिरी लक्ष्य क्या है? और यकीन मानिए इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। क्या एक नाटक का काम हमारे अंदर कोई खास एहसास पैदा करना है, या फिर क्या उसका काम सिर्फ हमें एक किरदार के अंजाम, उसकी किस्मत का गवाह बनाना है? और देखिए, इसी सवाल के जवाब में हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता है जो कहता है कि नाटक का पूरा जोर दर्शक के अंदर एक खास भाव या एहसास जगाने पर होना चाहिए, और दूसरा रास्ता है जो कहता है कि नहीं, नाटक का सेंटर पॉइंट तो किरदार का आखिरी नतीजा यानी उसकी नियति है। तो चलिए पहले खाके से शुरू करते हैं। ये है भावना का पूर्वी नुस्खा। हाँ, इसकी जड़ें मिलती हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। और जानते हैं इसकी सबसे अनोखी बात क्या है? इसका मकसद कहानी में कोई लड़ाई झगड़ा या टकराव दिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका पूरा ध्यान होता है दर्शकों के मन में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही गहरी भावना पैदा करना। और इस पूरी परंपरा के दिल में जो कॉन्सेप्ट है वो है रस। अब रस का मतलब समझ लीजिए स्वाद या एसेंस। तो नाटक कितना सफल रहा ये इस बात से नहीं नापा जाता कि कहानी कितनी जबरदस्त थी, नहीं, बल्कि इस बात से कि क्या वो नाटक दर्शकों को सही रस का अनुभव करा पाया या नहीं। अब ये रस का आइडिया सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर इन उदाहरणों से सब साफ हो जाएगा। जैसे श्रृंगार रस, ये प्रेम की भावना है। वीर रस, ये वीरता का एहसास है। और करुण रस, इससे करुणा या दया का भाव पैदा होता है। तो हर रस एक अलग तरह का इमोशनल फ्लेवर है। अब सवाल यह है कि इन रसों को बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, इसके लिए संस्कृत नाटक में अक्सर कुछ तयशुदा किरदार होते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। एक नायक है, एक नायिका है और एक विदूषक यानी जोकर या मस्खरा। ये जाने पहचाने से किरदार एक तरह से दर्शकों को उस खास रस तक पहुंचने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये था पहला खाका। अब चलिए कहानी का दूसरा रुख देखते हैं, भाग्य का पश्चिमी नुस्खा। देखिए, पश्चिम में ड्रामा को आमतौर पर दो चीजों के आधार पर बांटा जाता है। एक तो कहानी का टोन कैसा है, मतलब वो सीरियस है या मजाकिया, और दूसरा सबसे जरूरी कि उसके हीरो का आखिरी अंजाम क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेजेडी की, यानी त्रासदी की। ट्रेजेडी का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है हिमाशिया। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है हीरो के अंदर की कोई बड़ी कमी या ट्रैजिक फ्लॉ। सोचिए, जैसे बहुत ज्यादा घमंड या कोई एक गलत फैसला। यही वो चीज होती है जो आखिरकार उसे बर्बादी की तरफ ले जाती है। मतलब उसके बाहरी पतन का बीज उसके अंदर ही छिपा होता है। तो फिर ट्रेजेडी का मकसद क्या है? महान फिलोसोफर अरस्तू के मुताबिक इसका मकसद है कैथारसिस। ये क्या है? ये दर्शकों के मन में दया और डर जैसी तेज भावनाओं को जगाकर उन्हें एक तरह से साफ करना है, एक इमोशनल पर्ज। अब जरा सोचिए, ये रस वाले आइडिया से कितना अलग है। रस एक खास स्वाद बनाने की बात करता है, जबकि कैथारसिस भावनाओं को बाहर निकालने की। ट्रेजेडी के बाद अब आते हैं इसके बिल्कुल उल्टे सिरे पे, यानी कॉमेडी पर, जो कहानी को एक खुशनुमा मोड़ देती है। कॉमेडी का सीधा सा मकसद है हंसाना और मनोरंजन करना। इसमें आपको तेज तर्रार डायलॉग्स मिलेंगे, व्यंग्य मिलेगा और समाज की अजीबोगरीब बातों पर मजाक उड़ाया जाएगा। और हाँ, इसका अंत लगभग हमेशा खुशी खुशी होता है, ज्यादातर किसी शादी ब्याह के साथ। और आखिर में एक तीसरी बड़ी कैटेगरी है हिस्ट्री प्लेस, यानी ऐतिहासिक नाटक। हाँ, ये नाटक इतिहास से तो उठाए जाते हैं, पर इन्हें डॉक्यूमेंट्री समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। नाटककार अक्सर कहानी को ज्यादा असरदार बनाने के लिए या कोई बड़ा संदेश देने के लिए थोड़ी बहुत पोएटिक लाइसेंस ले लेते हैं, मतलब वो तथ्यों को थोड़ा बदल देते हैं। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहां एक नजर में देखिए, ट्रेजेडी का अंत बर्बादी, कॉमेडी का अंत खुशी और शादी, और हिस्ट्री प्ले का अंत जैसा भी इतिहास में हुआ हो। टोन भी देखिए कितना अलग है। एक तरफ गंभीरता है, दूसरी तरफ हल्का फुल्का माहौल। और फोकस एक का व्यक्ति के पतन पर, दूसरे का समाज के मेल मिलाप पर। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, वो सबसे बड़ा फर्क।
संस्कृत नाटक का सवाल है दर्शक को अंदर से कैसा महसूस होना चाहिए, यानी फोकस है रस पर। वहीं पश्चिमी नाटक का सवाल है किरदार का बाहरी अंजाम क्या होगा, यानी फोकस है किस्मत पर। एक का जोर अंदर की भावना पर है, दूसरे का बाहर के नतीजे पर। तो सवाल ये है कि इन दो अलग अलग खाकों को समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम किसी कहानी के पीछे का क्यों समझ जाते हैं तो उसे देखने का, उसे सराहने का मजा ही कुछ और होता है। और ये सिर्फ पुराने नाटकों पर लागू नहीं होता, बल्कि आज की फिल्मों और वेब सीरीज पर भी उतना ही लागू होता है। अब से जब भी कोई कहानी देखें तो इस नज़रिए से भी सोच सकते हैं, क्या ये कहानी हमारे अंदर कोई इमोशनल स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर क्या ये हमें किसी किरदार के एक तयशुदा अंजाम की तरफ लेकर जा रही है। तो अगली बार जब कोई भी कहानी देखें, चाहे फिल्म हो या शो, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, ये किस्मत का सफर है या किसी एहसास का नुस्खा? हो सकता है जवाब आपको हैरान कर दे। Hey there and welcome. Today, we're getting right into the soul of storytelling. We're going to look at two totally different ways the world has tried to answer one of the biggest questions in all of art. So, let's just get right to it with this big question. Think about it. When you sit down to watch a play, or really anything, what's the goal? What's the story supposed to do to you? Is it about creating this perfect, specific vibe that you just soak in? Or is it all about taking you on this emotional roller coaster, right to the edge, and then letting you go? Okay, to start answering that, we've got to travel way back. Our first stop is ancient India, home to one of the oldest and, you'll see, most fascinating philosophies about what theater is all about. So, we're talking about Sanskrit drama. It's all rooted in this ancient guide, the Natya Shastra. And right away, you have to throw out what you think a story is supposed to be. Seriously. It's not about the hero's journey or good versus evil or any of that. The entire point is something different. It's about creating what's called emotional resonance. And the key to unlocking this whole idea is one word, rasa. Now, what does that mean? The best way to think about it is flavor. Yeah, literally, an emotional flavor. The playwright is basically a master chef, and the entire play is this meticulously prepared meal. The goal? To make you, the audience, experience one single perfect emotional taste. So, what kind of flavors are we talking about? Well, there are 8 main ones. You've got Shringara, that's the flavor of love, of romance. Then there's Veera, which is all about heroism, that feeling of courage. You also have Karuna, which is a really deep, almost profound sense of compassion or even sadness. And there are others too, of course, but the big idea here is that everything in the play, the music, the characters, the plot, it all works together to serve up just one of these specific flavors. And they don't leave this up to chance. The whole thing is built on a really specific structure. The plays kick off with a prayer, the Nandi, and they wrap up with a blessing, the Bharatavakya. And they even have these familiar stock characters you'd see again and again. You know, the noble hero, the Nayaka, or the funny sidekick, the Vidushaka. It's all part of the recipe, making sure that emotional dish is cooked to perfection. Okay, now let's do a complete 180. We're going to jump across the globe and land smack dab in the middle of the Western tradition. And here, forget about savoring a flavor. The story's all about one thing, watching a single person go head-to-head with their own destiny. And in this world, our hero basically has 3 roads they can go down. There's the path of tragedy, which, you guessed it, leads to a spectacular fall. Then there's the path of comedy, which usually ends with everyone getting together. And finally, you have the path of history, which is all about looking at someone's legacy. But let's zoom in on the big one, the one everyone knows, tragedy. This genre is obsessed with human suffering. The entire point is to build up a great, noble, impressive person, our tragic hero, and then watch them go through an absolutely catastrophic downfall. But here's the kicker. Why does this amazing person fall? It's not just bad luck. No, it's something inside them. It's called hamartia, the tragic flaw. It's this fundamental crack in their character, you know, like way too much pride or hubris that they just can't shake. It literally becomes the engine of their own destruction. They do it to themselves. So you might be asking, why on earth would anyone want to watch that? Well, according to the ancient Greeks, the whole point for the audience is something called catharsis. The idea is, as you watch this horrible downfall, you feel these powerful emotions, pity for the hero and fear that, hey, maybe this could happen to me. And then at the very end, the story purges those feelings from you. It's like a deep emotional cleanse, a total release. Now, the other 2 paths are a little more straightforward. Comedies,
They're there to make you laugh, poke fun at how ridiculous we all are, and they almost always end with things getting sorted out, usually with a wedding. And history plays, well, they're exactly what they sound like, dramatizing real events, digging into big ideas like power, nationhood, and what makes a good leader. Okay, so we've got these two totally different, really powerful ways of telling a story. One's a chef, the other's, well, a roller coaster operator. So what happens when we put them head to head? And boom, here it is, the core difference, plain and simple. Sanskrit drama is all about evoking rasa, giving you a sustained, delightful flavor to savor. Western tragedy, its goal is catharsis, a powerful emotional purge. Think about that. One wants you to hold on to a feeling, the other wants you to get rid of it. And you can really see how that end goal shapes everything in the Western tradition. For tragedy, the serious tone, the focus on one person's collapse, it all has to lead to that disastrous ending to give you the catharsis. For comedy, the lighthearted vibe and focus on the group, that has to lead to the happy ending, to restore harmony. The entire play is built to deliver that final emotional payload. Okay, so, ancient Indian drama, Greek tragedy. Why does any of this matter to you right now watching your favorite show? Because, and this is the cool part, it gives you a brand new way to look at every single story you come across. Just think about the last movie you absolutely loved, or that show you just binged. What was it actually doing? Was it trying to create one perfect, lingering mood? A rasa of pure suspense or wonder, or maybe that bittersweet melancholy? Or was it a classic tragedy? Was it building up this amazing but flawed character just so you could feel that gut punch of a release when it all came crashing down? So, here's what I want you to take with you. The very next time you hit play on something, ask yourself that one question. It's going to totally change how you see it. Are you